तो इंशाल्लाह मेरे खिलाफ सभी बैठ रहे हैं सिविल गेट यूनिवर्सिटी 1984 सेकंड शिफ्ट। तो मैंने 13 कन्वेंशन अटेंड किया। मैं ये देखता था कि जब मैं कन्वेंशन अटेंड भाई राष्ट्रीय विवेक और हमारे साहब, तो ये वो लोग थे जिन्होंने यानी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो मुझे लोग का अंदाजा नहीं था। तो उसकी कितनी एफर्ट होती है हर चीज को लाइन अप करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, हर चीज कहाँ होगी कैसे होगी। थोड़ी सी मैंने जिद्दत डाली, थोड़ा सा सर्दे के नाइट में डिनर हो जाए और सारी चीजें हो जाए। अच्छा बहुत शुक्रिया सबका। और मेरी तरफ से जो आइडियाज थे थोड़े बहुत मैंने डाले और काफी चीजें में हदी कर दी। इन्होंने तो कंप्यूटर पकड़ लिया और एक डिटेल इवेंट की इन्होंने चेक। मैं जो फील्ड में काम करता था जाहिर मतलब एवरीथिंग और बाकी उन्होंने भी मैं जाहिर करूँ। Welcome to Atlanta, everybody. Thank you for your patience. I appreciate that. And first and foremost, हमसे कोई तो उसको हमें first of all, we did not think that we can pull it off. We किसी को टक्कर ना all the way. This is going on and on. Thank you everybody for your communications, especially CCT seniors. We were newly founded chapter and have no idea what to do. They guided us all the way through, every step. ये बंदे का मैं शुक्रिया करना भूल गया। संदीप भाई, he is done a great job. He's having a little problem right now. You will see next tonight and also tomorrow. We have an excellent evening and we have an excellent prize. I will beat everybody prize from last week. Big round of applause for Sandeep bhai. One of the best evening guy in the night. मैं चला गया था So now we invite Mr. Abdullah Jafi to give us some updates on the citizen foundation. Everybody please have a seat. Please sit down. Thank you. May I please request you to take your seats so that we can actually tell you what the Citizens Foundation is. One thing that Atlanta takes pride in is that people here give patient hearing to the presenters. And I'm sure this evening will not be different. सबसे पहले तो मैं NEDs का और लोकल चैप्टर का बड़ा मशहूर हूँ कि आप लोगों ने सिटीजन फाउंडेशन को ये मौका दिया कि हम अपने मुताबिक आपको कुछ बता सकें। लेकिन सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ के स्टूडेंट के, उनके लिए मैं एक शेर पेश करता हूँ, उनकी नजर करता हूँ कि ये सब मेहनत हुई है कि ये ना देखो कि चरागों की नुमाइंदगी
ये ना देखो कि चरागों की लबे मदम को किस तरह हमने किया जैसे चरागा को। क्या बात है अब्दुल्ला भाई? These people have very good ability. Citizen Foundation was formed in 1995 with 5 schools, and the focus was to provide quality education in quality environment to children living in slums and rural areas. That is the focus, because education is the fundamental and root cause of the problems Pakistan is facing today. Next slide. With 5 schools today, Citizen Foundation is operating 2,033 schools all over Pakistan and educating 301,000 underprivileged children, providing quality education. So far, we have had 63,000 graduates from Citizens Foundation. And we, by the way, Citizens Foundation only employs female teachers. All our teachers are female. So we have 14,700 teachers, all very well trained. Our teachers training program is one of the best in Southeast Asia. We have another program that we give adult education to women who never had the chance of going and learning to read or write. So far, we have Thank you. Thank you so much. So far we have enabled 221,000 such women who can now read and write into language, and they can do simple math. And my wife Mansuri and I, we have met hundreds of them, and they say, what you have done, you have given us new eyes and new life with this education. Next slide, please. Economists of UK, which is a very prestigious publication, they said that Citizen Foundation is perhaps running the largest network of independent schools in the world, not Pakistan, in the world. Next slide, please. Now, as I said, Citizen Foundation believes in quality education, quality buildings. We do not like to give poor education to poor children. Next slide, please. These are our schools. You can see. Next slide. Once you go to Pakistan, children going to very prestigious private schools, when their children come home in the evening, they get 2 or 3 tutors to give them tuition in the evening. Citizen Foundation children cannot even dream of private tuition. They cannot. Despite that, and we have, by the way, we have chosen the federal board. And federal board is much more difficult than provincial boards. With that federal board, 88% children are passing their board exam in A+, A and B grade. So that is what they are teaching in our schools. That is what we are teaching. Next slide, please. Again, by design, Citizen Foundation has 50% girls and 50% boys in each and every school. So we keep a gender balance. We are known as having totally marvelous financial transparency. Charity Navigator and Guideshop, 2 of the largest monetary agencies in the world, they have declared Citizen Foundation, the rank they have given, there is no better rank than that. So that is our financial transparency. All our financial reports, our tax returns, they are on our website. Next one.
Now, with such an organization, and by the way, ladies, listen to this. Citizen Foundation is the largest employer of women in Pakistan in the private sector. Our overhead expenses audited by PwC, they have stayed under 10% forever. Next one, please. 275 plus US corporations, they match the donations of their employees, like Bank of America, Chase, and so on. Next one, please. We have won innumerable international awards. You can see that, UNESCO, Library of Congress, Clinton Global Initiative. You remember Expo 2020 in Dubai? 1,147 charities were competing for an award out of 141 countries. Citizen Foundation was one of the 10 getting that award. The only Pakistani charity. Then we have Ramon Magsaysay Award, which is equivalent of Nobel Prize for Asia. United Nations Girls Education Initiative, World Economic Forum. Next one. We are Sharia compliant. We have certificates from muftis that you can get your zakat, sadaqah and everything. So we are totally compliant and we maintain a totally different bank account for all zakat funds. Next one, please. Now, Citizen Foundation has so many programs, and I promised the local team that I will not go beyond the time allocated. So I will be finishing. GCF has multiple programs, but I will share one compliment from one of your prominent members of NED and a very respected person in Atlanta. He went to Pakistan and he came back and he sent me this text, and let me read this out to you. Dear Abdullah Jafri, I recently had the opportunity to meet two GCF associates, Fiza Khalid and Shafi Muhammad, during a meeting in Pakistan. Although I was not there, I was there for a different reason. I found myself listening to their conversation. They were actively negotiating partnership, secure trade skills, internships, job opportunities for those children, for those GCF graduates who were unable to go for higher education. I was genuinely impressed by their effort and pleasantly surprised to see that the Citizens Foundation goes beyond its stated mission and giving their children opportunities beyond their scope of responsibility. Jasmine and I would like to pledge $23,000 adopting a school for a year. Now this is the testimony from a man who personally saw, and he was just there by accident. But that accident really helped the Citizen Foundation. Next slide, please. Now, this is how people get help. $144 will educate a child for a year. $1,600 from kindergarten to 10th grade. $3,900 to adopt a classroom. $23,000 you can adopt a school for a year. And then $4,000 to $9,000 for what is education. Citizen Foundation alumni you can find in every good Pakistani university in Pakistan. We are one of the strongest alumni associations in Pakistan. We have another friend here, Rahim Shah Hussain. He came to our gaon and listened to our work. And he wrote a check of $23,000 to us. Rahim bhai, good to see you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I'm here to answer any questions. Thank you very much.
NED. Thanks a lot. God bless you. Atlanta, thank you very much for your time and for your dedication to the work. मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि थोड़े से पेशेंस के साथ हमारे साथ ताउन करें. एक खूबसूरत चेहरा उस वक्त और खूबसूरत लगता है जब उसके साथ कुछ काइंडनेस और ह्यूमैनिटी अटैच हो जाती है. आप सब यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा. अगेन कुछ कमी बेशी रह जाए तो हम माजरत खाएं, लेकिन जब कोई स्टेज पर आता है और आपसे बात करता है, यकीन करें उसका भी वक्त उतना ही कीमती है जितना आपका. तो जब आप सुनते हैं उसे भी अच्छा लगता है और आपको भी समझ में आएगा कि ये कौन लोग हैं और क्या बातें कर रहे हैं. आप सब एक ऐसे जय्यत इदारे से मुंसलिक हैं जो अपनी मिसाल आप हैं. NED का कोई ग्रेजुएट मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जिसने कुछ ना किया. तो आज आप सबके लिए a big round of applause to yourself for joining us here at Atlanta and having our local community speak to you in all different audiences. अभी आपके सामने मैं एक और ऐसे इंसान को दावा देना चाहती हूँ जो कि एक और सोशल कॉज से वाबस्ता है. ओबैक से अनवार खान. सर आप जहाँ भी हैं अगर माइक पे तशरीफ ले आए. अनवार खान साहब. Assalamu alaikum everyone. This is my pleasure and honor to be in front of you talking about the organization we have established. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा NEDs को कुछ याद कराना चाहता हूँ. 1978 मैं उस वक्त सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था. तो कुछ लोग कहने में ऊपर आए जो नजर नहीं आ रहा. 1978 मैं उस वक्त NED सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और मुझे डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि हार्ट का एक प्रॉब्लम है और अगर आपकी सर्जरी नहीं हुई तो इट मे बी पॉसिबल दैट यू कैन नॉट गेट सर्वाइव. एक बहुत बड़ा एक मुश्किल वक्त था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए. मेरे वालिदैन का ताल्लुक इंडिया से था. हम लोग इस पाकिस्तान में हुए थे. मैं वहीं ग्रो अप हुआ था. उस पाकिस्तान से मैंने हाई स्कूल किया. उसके बाद फिर मैं कराची आ गया, वहाँ से इंटर किया, NED में दाखिला लिया. मैं चूँकि ऑर्फन था, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था जब मैं 6 साल का था. फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं थी. तो मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल बन रहा था कि मैं कैसे ये सर्जरी करवाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा. लेकिन आई एम वेरी प्राउड टू सी ऑल माय NEDs कि मेरे NED के दोस्त साथी मेरे साथ खड़े हुए. मेरा जिना अस्पताल में दाखिला हुआ, लेकिन इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, जिना अस्पताल में सर्जरी नहीं होगी, तुम्हारी सर्जरी आगा खान में होगी. आगा खान उस जमाने में कराची का बड़ा मशहूर, सॉरी आगा खान कह रहा हूँ, मिड ईस्ट मेडिकल सेंटर जो क्लिफ्टन में होता था. मिड ईस्ट मेडिकल सेंटर उस जमाने में एक बड़ा एक रिनाउंड इदारा समझा जाता था सर्जरी के लिए. डॉक्टर गफ्फार जोतोई ने सर्जरी की. उसके लिए हमारी NED की पूरी जो तंजीम की तमाम तंजीमें उसमें शामिल हैं. सब लोगों ने इकट्ठे हुए और मेरे लिए फंड रेजिंग की गई और इतनी बड़ी फंड रेजिंग हुई कि न सिर्फ मेरी सर्जरी हुई बल्कि उसके बाद कोई 3 सर्जरीज उस पैसों से की गई. मेरे बहुत सारे साथी यहाँ अभी भी मौजूद हैं. दूसरे NED के हवाले से एक और बात होता है. चलो मेरा ब्लड ग्रुप था AB नेगेटिव. उसके लिए तकरीबन NED के 300 से ज्यादा लोगों ने अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया और मुझे ब्लड दिया गया, डोनेट किया गया. मैं आज भी सोचता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे ये जिंदगी दी, उसकी कुछ वजह थी. और वो वजह क्या थी मैं 2 मिनट में आपके सामने शेयर कर देता हूँ. कि जब मैं पाकिस्तान में NED की तालीम खत्म करने के बाद कुछ अर्से पाकिस्तान में रहा, फिर मैंने कहा वो हो गया. यहाँ मैंने जनरल मोटर्स ज्वाइन कर ली. बहुत अच्छी जिंदगी थी, सब कुछ बहुत अच्छा गुजर रहा था. 2004 में इत्तेफाक से मुझे एक आर्टिकल पढ़ने को मिला जो इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के होराइजन के मैगजीन में था. उसमें तस्करा था उन बिहारी लोगों का या स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज का जो इस पाकिस्तान में अभी तक रह गए थे, मौजूदा बांग्लादेश में अभी तक थे.
I was very shocked to read that article. मैंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया और मुझे अपने आप में अफसोस भी हुआ कि मेरी फैमिली भी कैंप में थी, मेरी फैमिली भी मेरे कैंप में रही है मीरपुर में। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये भी पॉसिबल था कि मैं अभी भी कैंप में हूँ, ये भी पॉसिबल था कि मेरे बच्चे भी कैंप में पढ़े हुए होते। जब ये ख्याल मेरे जहन में आया तो फिर एक जो है मैंने अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को अपने साथ इकट्ठा किया, उनसे बात की कि हमें कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक फैमिली अडॉप्ट करने के लिए सोचा बांग्लादेश में, और फिर मैं बांग्लादेश गया 2004 जुलाई में 31 साल के बाद। और सिर्फ ये सोच के मैं बांग्लादेश गया कि अल्लाह ताला ने मुझे जहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, तो हमें भी इस एहसान का, अल्लाह का एहसान का बदला में किसी न किसी तरह से चुकाना चाहिए, देना चाहिए। अल्लाह ताला के एहसान का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं छोटी सी वो करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि जब मैं बांग्लादेश पहुंचा तो मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि बांग्लादेश के 13 शहरों में 116 कैंप हैं जहाँ तकरीबन 4 लाख उर्दू बोलने वाले लोग अभी तक वहाँ पर हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश ने उनको एज ए गद्दार या टेरर के तौर पर यूज करते थे, तो उस वक्त उनकी पोजीशन बिल्कुल स्टेटस थी। अब सूरत हाल थोड़ी सी बदल चुकी है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा उस वक्त मेरे जहन में था कि मैं किसी एक फैमिली को अडॉप्ट करूँगा, लेकिन मेरे मुमकिन नहीं था। मैं जिस फैमिली से बात करता था वो सब डिजर्विंग नजर आती थी। लेकिन आप यकीन माने कि अल्लाह ताला किस तरह से रास्ता बनाता है। और मैं बस एक चीज़ का तस्करा करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मैं रंगपुर का वो शहर जहाँ मैं पला बड़ा था, वहाँ पे कैंप में मैं वॉक कर रहा था। तो कैंप की गली के सामने छोटे 3 बच्चे खड़े हुए थे। तो वो उन्होंने कहा कि गली बंद है। मैंने बच्चों से पूछा गली क्यों बंद है, तो बच्चों ने मुझे जवाब दिया अम्मा लोग नहा रही हैं। मेरे ध्यान में कोई कंसेप्ट नहीं आया कि गली के सामने बच्चे के खड़ा होना नहाने में क्या रिलेशनशिप है। लेकिन बाद में मुझे पता ही चला कि वहाँ पर एक हैंडपंप है, क्योंकि कोई प्राइवेसी बाथरूम नहीं था। तो जब खवातीन को नहाना धोना होता था तो दोनों एंड पे बच्चों को खड़ा कर देती थी ताकि लोग आना जाना ना कर सके और उसको आपको बुजुर्ग करें। जब मैंने ये सुना तो मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया कि हम लोग जिस घर पर रहते हैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि माशाल्लाह कितने बाथरूम है, कितने बेडरूम्स हैं हमारे घरों में, और यहाँ भी लोग किस तरह से रह रहे हैं। तो मैंने फौरी तौर पर जो पैसा मैं लेके आया था $1750 मेरे पास थे, वो एक फैमिली को मैं सपोर्ट करके लाया था। मैंने वो पैसा अपने दोस्त को दिया। मैंने कहा यार किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ और उससे बात करो कि बाथरूम बनाने का कितना पैसा लगता है, बाथरूम बनवा देते हैं। इसलिए कि मेरे लिए मुश्किल है कि किसी फैमिली को अडॉप्ट करें, ज़्यादा बेहतर है बाथरूम बनवा दीजिए। देखिए अल्लाह ताला किस तरह आसानियाँ पैदा करता है। जब कॉन्ट्रैक्टर आया तो उसे एस्टिमेट मुझे दिया और एस्टिमेट को मैंने कन्वर्ट किया डॉलर में, तो $1740 बनता था और मेरे पास थे पैसे $1750। मैंने अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए इस पैसे को मुझे भेजा है यहाँ पर इस काम करने के लिए। मैंने पैसे निकाला, अपने दोस्त को दिया बाथरूम शुरू करा दे। और मैंने कहा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं यहाँ रुकने की जरूरत भी नहीं है, अब मैं चलता हूँ। लेकिन जैसे मैं बाहर के रास्ते में पहुंचा तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि कुछ लोग आपसे, कुछ खवातीन आपसे मिलना चाह रही हैं। मैं रुक गया। एक खातून मेरी माँ की उम्र की थी, वो आई, मेरे सर पे हाथ फेर रही है, मेरे गालों पे हाथ फेर रही है, कहनी बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो। मैंने कहा मुझे शर्मिंदा न कहें, मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम खुद नहीं सोच सकते तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो। वर्षों से हमारे ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इज्जत की जगह देता जहाँ हम नहाना धोना कर सकते। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा बस दुआ में याद रखिएगा, मुझे अब इजाजत दें। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा और नहीं देखोगे हम लोगों के साथ क्या मसला है। एंड शी स्टार्ट वॉकिंग। वे आज भी बहुत याद है कि वो इस वक्त के लिए नहीं रुकी कि मुझसे पूछे कि मैं हाँ या नहीं में जवाब दूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वॉक करना शुरू किया और सारे प्रॉब्लम दिखाती जा रही हैं, बताती जा रही हैं। और मैं डायरी में नोट करता जा रहा हूँ बगैर किसी थॉट के, किसी उसके, इसलिए कोई ऐसा थॉट प्रोसेस में लेके गया ही नहीं था। इसके बाद मैं थोड़ा सा गैप करता हूँ। मैं वापस जब अमेरिका पहुंचा,
आज मेरे बहुत सारे दोस्त NED के यहाँ मौजूद होंगे। मैंने अपने क्लास फेलोज को एक ईमेल किया NED को कि आपने बांग्लादेश गया था, वहाँ ये सिलसिला है और कुछ चीज़ों की हेल्प करने की ज़रूरत है और आपकी हेल्प चाहिए। आप यकीन मानें कि विदिन मेरे ख्याल में 2 weeks मेरे पास $20,000 जो है मौजूद है, जो मेरे क्लास फेलोज भी हैं। $20,000 आ गया। अब मेरे पास, मैं परेशान था, मैं डॉलर लेके मैं करूँगा क्या है इतने पैसों का। मेरे दिन में कुछ वो नहीं था। फिर अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। फिर सेनेटर रिचर्ड लुगर से हमने रब्ता किया, फिर उन्होंने फिर हमारे US एम्बेसी से रब्ता कराया। अल्हम्दुलिल्लाह आज, अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आज हम लोग तकरीबन 13 स्कूल चला रहे हैं, जहाँ 7,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बच्चे इस वक्त मेडिकल में, इंजीनियरिंग में हैं, यानी वो तमाम जो लैबोरेटरीज का एक कंसेप्ट था उसको हमने एसेट्स में तब्दील कर दिया। वो बच्चे जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं था, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनके लिए हम वहाँ खड़े हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों का, साथियों का, खुसूसन NED के साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ खड़े हुए और हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे इसका यकीन है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, एक बड़ी कोताही मुझसे हो गई थी। ये बताना था मुझे कि NED और TCF का बड़ा साथ है। हमारे जो CEO हैं असद अयूब, he is an NED। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जैसे जैसे आगे की तरफ जा रही है, मुझे कुछ बेचैनी नजर आ रही है क्राउड में। खाना आपका इंतजार यकीनन कर रहा है, लेकिन इससे पहले कुछ हल्की फुल्की बातें। हमारे यहाँ एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है पाकिस्तानी फैमिलीज के अंदर कि बच्चे को या तो आपने डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। उसके अलावा हम दूसरी कोई बात सोचने से पहले सोचते ज़रूर है कि क्या ये एडवाइस करना भी बच्चों को ठीक है कि नहीं। लेकिन अभी हाल ही में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कहा कि कोशिश करें कि बच्चे ऐवानों तक पहुँचे। जिस मुल्क से हम आए हैं वहाँ ऐवानों में बात करना और उस बारे में सोचना खासा मुश्किल है। लेकिन यहाँ हमारी खुशकिस्मती है कि अटलांटा के कई चेहरे अब ऐवानों का रुख कर रहे हैं। उन्हीं में से एक साहब हमारे साथ हैं जिनका ताल्लुक है डेमोक्रेटिक पार्टी से, और जॉर्जिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वो हमारी पूरी कम्युनिटी irrespective of color, caste, creed and religion he's been representing. He shows up when there is a calamity, he shows up when there is a celebration. He is one of our own from Georgia. Put your hands together for Mr. Farooq Rohan. It's campaign season, so it's busy running around. First, welcome to Atlanta. I hope you're enjoying. Such a privilege. I've been here for almost 28 years. Just like everybody else here, my journey started obviously from Pakistan. I was born in Karachi. I did my O-levels, A-levels. Obviously, I didn't go to NED, but my cousins did. So there is a little bit of a renaissance there. As a first Pakistani American elected in the state of Georgia, I believe that apart from a businessman, doctor, engineers, I think it's extremely important for us to have a voice. We are in a place right now where we need more voices like us, not for us, for our future generation. It's extremely important that people who are serving look like us, understand our ethnicity, understand our religion, understand who we are as Pakistani Americans. The Pakistani Americans have been a backbone for almost so many years, for decades before I even came here. And they're creating so many resources, entrepreneurship, doctors, obviously, NED University. So I tell you what, when I got elected the first time and I visited Pakistan, I actually toured NED University and their technology incubator center. And I have to tell you that that was the most proudest moment for me
as somebody who was born in Karachi, came here, got educated, got elected, and then went back to make a difference. And that difference was that I was talking about how we can unify our education system in the US and how we can unify what we can give back to Pakistan. For me, education is the number one priority. If we want to change things in Pakistan, we have to educate people. We have to invest in education. And I'm so proud of one moment that I can tell you that when I was listening to all these young students from NED, not a single person asked me a question about how do I get a visa, where do I need to go to American Embassy, and how do I get a job in America. Not a single person. You know what they asked me? How can you bring knowledge from US to Pakistan? They wanted to create jobs and economy, young talent locally in Karachi, locally. And that was such a proud moment for me that we have this perception about everybody wants to come here, everybody wants to live in America. How do we get here? But you should thank your leadership of what that university has created as of today. So one thing that I did was I did connect NED University with your number 2 engineering school in the nation and in the world, Georgia Tech Institute of Technology. I connected them with professors who are teaching them how to create incubators, how to create apps, and how do we create local economy and generation. So that was my first step after getting elected to go to Pakistan. So many thanks to you. So many thanks to you and the Alumni Association for creating a foundation for the future or of generation, not here, but also in Pakistan. I always believe in that the elections, the politics we're involved in here in America, it's about the future of what we're giving to our kids. Your kids are here. They might not become an engineer. They might not become an entrepreneur. They might go into politics and media. And we need more representation now than any day you can think of. So we have so many people, that I know personally that who have done so much here and overseas. And obviously, Rahim Shah has been one of the pioneers in Atlanta community, and even what he has done in Dir in northern Pakistan for educating our communities. And you are doing exactly the same. Just remember this: your kids are here. They need representation in this country. Wherever you came from California to New York to Florida, make sure they understand we are Americans, we are part of this democracy, and we need a voice. This country is built by engineers, just like you all, farmers, innovators, and entrepreneurs. And you are part of that fabric of this nation. Thank you so much. Thank you, just a reminder, we have this flyer on your tables. There are these door prizes will be distributed tomorrow. You have to be present for these. There will be an Apple iPad, Apple iWatch, and this Fitbit. Again, the program is going to start at 9 a.m. sharp in this room. The breakfast is between 8 a.m. and 9 a.m. Thank you. Also, this event like this is not possible without having the donors. So it's time we will be recognizing some of our donors here. So for that, I invite our Vice Chancellor from NED, Dr. Sosh Lodi, please. Our NED President, Dr. Asma Ali.
This time we'll be inviting our silver donor to the stage to receive their flags. Mr. Maksud Malik, he's with M&J Engineering. Here. Our second silver donor is Mr. Tariq Hamid. He's with Dallas Geotech. And Mr. Shakil is here. I think he's with M&J Engineering. There's Wamik Hamid. He's there. He's a brother of Mr. Tariq Hamid. He can receive the award from Dallas Geotech. चलें जी, कुछ तालियों की भरमार होनी चाहिए। क्या हो गया आप लोगों को? मुझे मालूम है हवा में चलती है, लेकिन इवेंट फिलहाल नहीं कंप्लीट कर जाए। और ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जो लोग ऐसे प्रोग्रामों को मुमकिन बनाते हैं उनको सराहा जाना भी बहुत ज़रूरी है। और ये इसी सूरत में हो सकता है अगर वो दो हाथ जो आपके साथ हैं वो बजते रहे तो शाम आगे अच्छी तरह बढ़ती रहेगी। कहते हैं जनाब, इंसान उसी सूरत में आगे बढ़ सकता है जब वो अपने साथ वालों को लेके चले। हमें से बहुत सारे लोग किसी न किसी मकाम पे पहुंच के बहुत अकेले हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ या तो वो लोग वाबस्ता होते हैं जिन्हें हमसे कोई मतलब है, या ऐसे जो हमें इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम खुशकिस्मत हैं जो इन सारी बातों को पसे पुश डालकर दूसरों को साथ लेके चलना अपना अव्वलीन फरीजा समझते हैं। ऐसे ही एक शख्स अटलांटा में मौजूद है। ही इज अ ब्रिलियंट मैन। जितने भी फिलांथ्रोपी के काम हैं, जितने भी फंड रेजर्स होते हैं, मैं पिछले 10 साल से उनको हर जगह देख रही हूँ और मैंने हर जगह उनको यही बात करते हुए सुना है, आगे बढ़ो और सबको साथ लेके चलो। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा रहीम शाह आफुल रिप्रेजेंटिंग वॉइसेस ऑफ मुस्लिम। Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. सबसे पहले तो Zahir bhai and Reis bhai, I'm very grateful to you for getting me involved with such a great audience and such a great event. And I wish you and your team to establish a very successful chapter here, and I have every confidence inshallah you will do that. Also, जो हमारे मेहमान आए हैं पाकिस्तान से और यहाँ भी जो स्टेट्स आए हैं, welcome to Atlanta. On behalf of the Pakistani community, Muslim community,
And over the next 2 days, 3 days, I'll be honored for any one of you to come visit our house. It's your home. You're more than welcome to visit us, have some chai with us, have some gupshup with us, but please do feel like Atlanta is your home. And you have a home, you have multiple homes in Atlanta. A little bit about myself. I was born in Deen, Pakistan, but my education was done in Karachi. So I did my FSC from SM Science College, and my aspiration was to get into NED or down in the college. Didn't happen. I did not have enough grades or marks, whatever we used to call it at the time. I left Pakistan, came here, and so I feel privileged to be among the people who graduated from an institution that I had inspired. In 2019, few of our friends decided that we need to really start thinking about how we live in this country. And the basic premise was that we cannot live in this country as immigrants forever. And please pay attention, because if we don't change the mentality of being living in this country as immigrants, we are not doing anything for our next generation. As soon as we get that oath and get our citizenship, the Constitution of this country gives us the same rights and the same privileges as those people who have been living here for 200 years. So that it becomes our responsibility to make sure that we take advantage of those privileges and those rights and those opportunities. Now, we're fortunate because, especially the Pakistani community, people sitting here, I would say that wealth-wise, we may be the top 2 or 3% of this country. Top 2 or 3%. Some of them may be in the top 1% of this country. So Allah has given us a lot of wealth. The question is, what do we do with that? And we have dual responsibility. Right? We have responsibility toward our motherland, which is Pakistan, and our homeland, which is USA. We cannot, I talk to my doctor's friend quite a lot that, look, if we did not have educations or institutions like NED or Dominical College or Cabot Medical College and all those university free educations, guess what? We would not have been where we are today. So we owe that country a lot. But in the meantime, we have obligations in this country as well. So we put a small group together called Voice to Muslims, and our basic objective was that we want to create our voices. How to influence policies and laws at the city level, county level, state level, and federal level. And mashallah, it was November 2019, in 2020, we supported 37 candidates, federal, state, county, and city, and of those 37 candidates, 80% of them won. 80%. We continue to struggle, and Allah ka raham tha, in 2022, we were able to send 4 Muslims to state capitals. 2 to state house, and 2 to state senate, and Farouk is one of those individuals, mashallah, who worked very hard, and we hope he will continue doing what he's doing, because now he will voice at the capital. So, my only request to you guys today is that, and personally, I have changed my philanthropic work as an individual, because I think sometimes we have to use our philanthropic
work to influence policies. In this country, if you want to have a voice, either you have to have votes or you have to have money. There is no other thing in between. Either vote or money. Guess what? We don't have the votes. And what I mean by that is our votes are scattered because we don't live in one big community. We live in pockets. Though we can make influence, we can make difference, but money we have plenty. And I think we need to start using our money to buy power, buy influence. And I tell my friends that if you really want to help Pakistan, get some people in the Senate, in the House who are pro-Pakistanis. And guess what? We will do far more for Pakistan than you and I do as an individual. The other request I would make, and this is really, I'm seeing this thing, it hurts me that do not let the politics of Pakistan divide us in this country. Please. We are already divided. We are already divided economically, socially, ethnically, religiously. And I think this political division is very dangerous. So please keep the Pakistani politics in Pakistan. Here we have to focus on our own and making sure that how do we help Pakistan and our children and the future generation. Assalamu alaikum. Once again, good luck with the convention, and thank you very much, Raees Bhai and Tahir Bhai. रहीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला आज हमारे साथ यहाँ NED के कन्वेंशन में शिरकत के लिए आए। एक ऐसे साहब हैं इस वक्त हमारे दरमियान जिनके लिए मुझे ये कहने में कतई कोई आड़ नहीं है। आपने सुना होगा, खुदा जब रुज़्क़ देता है नज़ाकत आगे करती है, लेकिन इस शख्स पे इस बात का इतलाफ़ होता है, खुदा जब हुनर देता है सखावत आ ही जाती है। मेरी नॉलेज में कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो इनको ना मिला हो उस खिदमत के लिए, उस खैर के लिए जो सर अंजाम दे रहे हैं। आप लोगों में से कई लोग इनके साथ इसमें शामिल हैं। NED के कई डोनर्स हैं जिन्होंने इनकी मदद की है। ये एक ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे इस तरह बेजारी और इस तरह नफ़रत का इजहार किया जाता है कि वो ख़वातीन जो इसमें मुब्तला हैं उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, उन्हें दरख्तों के नीचे डाल दिया जाता है और उनके पास से उठने वाले ताफुन के हाथों मजबूर होकर कई लोग उनको अपने आप से इतना दूर कर देते हैं कि वो सिसक के जान दे देती हैं। ये है कमज़ोरी हमारे माशरे की, जहाँ पर इंफॉर्मेशन और नॉलेज ना होने की वजह से कई लोग कई बीमारियों का शिकार होकर सड़कों पर जान दे देते हैं। अपनी भरपूर तालियों में यहाँ इस्तकबाल कीजिए उस शख्सियत का जो कोही गोज वुमेन हॉस्पिटल चला रहे हैं, आपके और हमारे डॉक्टर शेख। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, सबसे पहले तो मैं NED का हद से ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात का मौका दिया कि औरतों की सेहत के बारे में पाकिस्तान में जो हाल है उसके बारे में कुछ बताऊँ। मर्दों को जो हमारे पॉलिसी साज हैं उनको औरतों की सेहत से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना हमारे मुल्लाओं को, ना हमारे फौजियों को और ना हमारे सियासतदानों को, और ख़ास तौर पर गरीब औरतों की सेहत से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पाकिस्तान में जो औरतों की सूरत हाल है सेहत की अपने मरीजों के हवाले से कुछ बता सकता हूँ और बताने की कोशिश करूँगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। This is the only slide. We have a video. अच्छा ठीक है, तो मेरी जो पहली स्लाइड है वो एक ऐसी लड़की की तस्वीर है जिसकी 14 साल की उम्र में शादी हुई
جس کا خوددار سے تعلق تھا اور وہ 15 سال کی عمر میں وہ پریگننٹ ہوئی اور 9 مہینے کے بعد جب وہ زچگی کے عمل سے گزری تو 4 دن تک اس کو درد ہوتا رہا. 4 دن کے بعد جب اس کی بچہ مر گیا اور سگڑ کے چھوٹا ہو گیا سر تب اس کی ڈلیوری ہوئی. اس عورت نے بچی نے یہ سمجھا کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, لیکن مسئلہ تو اب شروع ہوا تھا کیونکہ جب بچے کا سر 35 میں پھنسا ہوتا ہے تو بچے کے سر سے اوپر پریشر پڑنا ہوتا ہے اور مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی میں سراغ ہو جاتا ہے تو 2 دن کے بعد اس بچی کا پیشاب بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ عورتیں ان کا مسلسل پیشاب بہتا رہتا ہے. ان کو 5-6 ہفتے میں شوہر ان کے چھوڑ دیتے ہیں, گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. ان کو اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے رہنا پڑتا ہے اور وہاں بھی وہ ان کے سب کے ساتھ مل کے نہیں رہتی ہیں. کیونکہ کوئی لڑکی کیسے رہ سکتی ہے جس کا ہر وقت پیشاب بہ رہا ہو, اس کے بھائی بہن ماں باپ کوئی بھی ایسا نہیں چاہتے ہیں. تو ایسی لڑکیاں ہماری مریض ہوتی ہیں اور ایسے مریضوں کی تعداد پاکستان میں تقریباً ہر سال 5,000 سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ ساری کی ساری غریب لڑکیاں ہوتی ہیں. ان کا علاج کوئی کرتا نہیں ہے, ان کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں. سوری نیکسٹ پلیز نیکسٹ. یہ مریض خوددار سے اس کا تعلق ہے. نیکسٹ پلیز. یہ ان کی حالت ہوتی ہے, یہ اپنے خاندان میں رہتے ہوئے بھی خاندان سے دوری رہتی ہے, کوئی کو دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے. اور ان کا علاج اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ غریب ہوتی ہیں اور پیسے نہیں دے سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچوں کی شادی. ہمارے ملک میں تقریباً 60% لڑکیوں کی شادی 18 سال سے کم عمر میں ہوتی ہے اور جو لوور سوشو اکنامی کلاس ہے اس میں تو 12-13 سال میں شادی ہونا عام بات ہے. نیکسٹ پلیز. اس عمر کے لوگ بچوں کو خرید لیتے ہیں 4 گنا بڑی عمر کے. ان بچوں کا نہ کوئی حق ہوتا ہے نہ پتہ ہوتا ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, پریگننٹ بھی آتی ہیں, جان بھی دے دیتی ہیں. نیکسٹ پلیز. دوسرا ہے مسئلہ میٹرنل ڈیتھ ہے. پاکستان میں 1 لاکھ, اب امریکہ میں اگر 1 لاکھ پریگننسی ہوتی ہے تو اس میں 6 عورتیں مرتی ہیں, انگلینڈ میں 4 اور سویڈن میں 2. پاکستان میں اگر 1 لاکھ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس میں 450 عورتیں مر جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھنٹے پہ 2 عورتیں مرتی ہیں. سال میں 20,000 عورتیں موت کا شکار ہوتی ہیں جن کا قصور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ تقریباً 6 لاکھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرتی نہیں ہیں لیکن ان کی زندگی سے بدتر ہوتی ہے. ان کا پیشاب ہوتا رہتا ہے, ان کو مستقل درد ہوتا رہتا ہے, ان کو انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے, ان کے شوہر سے تعلقات برقرار نہیں رہتے ہیں, وہ ڈپریس ہوتی ہیں مکمل طور پر. یہ تصویر اورنگی کی ہے جہاں پر 9 سال کی 9 بچوں کی ماں کے مری تھی. ہمارے سائیکیٹرسٹ دوست ہیں, انہوں نے یہ پینٹنگ بنائی تھی. ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب ماں مرتی ہے تو خاندان بالکل بکھر جاتا ہے. 50% چھوٹے بچے, 8 بچوں کی ماں مرتی ہے تو 1 سال کے اندر مر جاتے ہیں. باقی جو بچے ہوتے ہیں گھر سے بھاگ جاتے ہیں, سوتی ماں سے بنتی نہیں ہے, وہ جاوید اقبال جیسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے, ان کو بچوں کو مارتا ہے, ایبیوز کرتا ہے. یہ چھوٹے بچے گراجوں میں کام کرتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے ہمیں سب کو پتا ہے. اور یہ بیچارے اتنے نادار ہوتے ہیں کہ کہیں جا نہیں سکتے. نیکسٹ پلیز. لڑکیاں جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے وہ پانی بھرتی ہیں, 6 میل تک گھر کا کام کرتی ہیں, ماں کے ساتھ کام کرتی ہیں. پاکستان میں 70% لڑکیاں اسکول نہیں جاتی ہیں. پاکستان میں 3 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں. یہ ان بچوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے جو اسکول جاتے ہیں. جب تعلیم ہی نہیں ہوگی, خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہوگی تو ان کی موت اور ان کا میٹرنل ڈیتھ میں مرنا ایک ناگزیر بات ہوتی ہے. نیکسٹ. حل کیا ہے؟ حل تو تعلیم ہے, اس کے لیے عبداللہ صاحب لگے ہوئے ہیں, لیکن کام سرکار کا ہے, عبداللہ صاحب کا کام نہیں ہے. سرکار ہماری ایٹمک بم میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, میزائل میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, ان کو ایسے کام کرتی ہے جس کا عوام کو تعلق نہیں. تو ہماری یہ حالت بدلنے والی نہیں ہے. 10 عبداللہ صاحب اور چاہیے, 10 TCF اور چاہیے, تب یہ کام ہو سکے گا. اور وہ ایسا ہوتا نظر نہیں آتا ہے. تعلیم نہیں ہوگی تو یہ صورتحال ہوگی. اسی طرح سے پاکستان کے ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت ہم لوگ 8 ڈاکٹر پر 1 نرس بناتے ہیں. امریکہ میں 1 ڈاکٹر کے اوپر 15 سے 20 نرس اور ہیلتھ ورکر بنتے ہیں. تو پاکستان کے 85,000 گاؤں میں کم از کم 2 مڈ وائف ہونی چاہیے. اور جب تک 2 مڈ وائف نہیں ہوں گی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم لوگ مڈ وائفری کی ٹریننگ کرتے ہیں
पूरे पाकिस्तान में कोशिश करते हैं, हुकूमत को मजबूर करते हैं कि आप मिडवाइफ बनाएं। नेक्स्ट इनकी तालीम हो। नेक्स्ट और ये इज्जत के साथ ग्रेजुएट हो सकें और गांव देहातों में जाके काम कर सकें। यही तरीका है मैटरनल डेथ को बचाने का और फिस्टुला से बचाने का। दुनिया के जिन ममालिक में औरतों की अमवात को कम किया गया है उनका एक ही तरीका है, डॉक्टरों से जान छुड़ाएं। क्योंकि जब डॉक्टर काम करता है, देखिए सिजेरियन सेक्शन में हम अपने अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन कहते ही नहीं है, हम कहते हैं एबनॉर्मल एब्डोमिनल डिलीवरी। जहाँ डॉक्टर होता है सिजेरियन सेक्शन में 50% पे आता है, जहाँ मिडवाइफ होती है वहाँ 10% से कम होता है। दुनिया के सारे मुल्कों में ही देखा गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में जो हमारे पॉलिसी साज हैं उनका मकसद ये है ही नहीं कि औरतों की सेहत को काम करें और ख़ास तौर पर गरीब लड़कियों के लिए काम करें। नेक्स्ट ये इंटरनेशनल मिडवाइफरी डे पर एक तस्वीर खींची गई थी हमारे लड़कियों की और ये हमारी लड़कियाँ जो तालीम हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इस बार अगर कोई भी सवाल होगा तो मैं Thank you, Dr. Sayyed. So this is the time again we will be introducing our board members, board sponsors. So for that I will invite VC Dr. Modi again to the stage, Asman, Dr. Asman and Shahid. So our gold sponsor, Mr. Arif Zafar Mansuri, is with Pakistan Bank Capital Bank. Please come to stage. Thank you. Our next gold sponsor, Mr. Suhail Ahmed, is with New York Asphalt. Thank you. And our next gold sponsor, Zahid Ismail, is with the ZI Engineering. Congratulations, Atlanta chapter from ZI Engineering. Thank you. We'll invite our the publication team will be on the stage, please. Mohammad Masroor, Zahid Noor, Dr. Asmali, Tanveer Malik, he's not here, and Mr. Rashid Al-Bey. Thank you.
Now I would like to invite our another very important team, our fundraising team, Mrs. Zaid Ali. Well, Mujahid Ali, sorry. Zahid Noor and Afam Siddiqui, Mr. Mehdi Kamal, and Rashid Ali Bey. Thank you. They have done a tremendous job with fundraising for this event, so give a big round of applause. Oh, I'm sorry, it was Mrs. Zaid Babu. कमाल हमारे साथ है, राशिद अली हमारे साथ, राशिद कमाल मसूरी, राशिद मसूरी उसमें 82 लगता है, उसमें 82 या तो भाई Okay, so that concludes our first half of the program. We'll be serving dinner. Those are the two doors here for our ladies and the two doors in the back for men. Those. Okay, so the first left doors for ladies and two doors for men. We'll be doing dinner and Isha prayer. So we'll be taking about 30 to 35 minutes dinner. After that, the Isha prayer will be held on this program. Thank you. जनरल के बाद तो सारा प्रोग्राम है, तहसीन जावेद का जो है ना वो कॉन्सर्ट है, इसके बाद आज तहसीन जावेद है क्या, वो बड़ा अच्छा कॉन्सर्ट होगा। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। जी ये हमारा हाँ ये इशा पढ़ लेते हैं। ओ यार मुझे तो वुज़ू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ये हाँ हाँ जी बिल्कुल हाँ हाँ नहीं मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ ना, मुझे वुज़ू करना है जी, मुझे दीजिएगा। ये जो है बड़ी वाजिब अच्छा 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 माशाल्लाह टोरंटो ओंटारियो से। तो सेंस साहब ज़रा मुझे आप बताएंगे कि आप ऑथर हैं, आप टोरंटो से तशरीफ़ लाएँ, तो ज़रा आप बताइएगा आप किस मौजू पे लिखते हैं और जी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा आपके बारे में। अच्छा जी 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 ऑफ कोर्स जी हाँ, तो आफ्ताब रिजवी साहब की अब तो दूसरी किताब प्रिंट होने वाली है। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा जी अच्छा 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 माशाल्लाह, व्हाट हिस्ट्री, इनक्रेडिबल। जी 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 नहीं माशाल्लाह, नहीं सर थैंक यू सो मच। नहीं
by myself. Sayyid Hussain Azad Saab, what a pleasure meeting you. Thank you so much for all the pioneering work you did, and your आपने जो छोटा सा बीज लगाया था, माशाल्लाह, it's became a very तनावर दरख्त. तो thank you so much आपका, बहुत बहुत शुक्रिया.